Hello and welcome. You're watching this fresh and new edition of Market Masterclass on Money9, India's first multilingual platform for personal finance from TV9 News Network. I'm Sakshi Batra, and joining us on this show is a very special guest, Mr. Mayuresh Joshi, who is the head of equity research in India for William O'Neill and Company. Thank you very much, Mayuresh, for joining us, and welcome to Money9. This is your first interview with us, and hope to do many more interactions with you. But first up, my first question to you on this show would be, how are you looking at the markets currently, and are you worried about what's really happening on the macros? The oil prices are rising at the same time. If you see, bond yields are also at multi-month highs as well. So is that something that is going to primarily just challenge the bull rally that we have seen so much? Afternoon, Sakshi. So first of all, thank you so much for having me on your show, and congratulations to Money9. I think the success that you will achieve in the next few months and years, I think, will be unparalleled. So I think all the best to you and you guys, and all your support staff as well. And we're more Thank than you. happy to come on your show. That you call me. So Yes. coming to the markets, right? The last few weeks have been very patchy, specifically in terms of bond yields moving significantly higher. And significantly higher to the S&P dividend yield of 1.48%. So I think the jitteriness that gets played out in the markets is very obvious. I think it's a risk-free asset which is giving you 1.6 or 1.55 odd percent compared to a dividend yield of the index at 1.48. Obviously, the kind of nervousness that market participants had, which got reflected in tech stocks in the US, was very obvious. They did rebound yesterday. The package that has got announced, inflationary concerns coming through. So I think the ASO hedge factor from the Fed Chairman Powell is suggesting that it will take time for inflation to inch to those levels. So yeah, macros in terms of all these factors playing out, how debt to GDP numbers are playing out. Interestingly, I think OECD has come out with a report in terms of the expected real GDP projections for the next couple of years. And I think India stands out, Sakshi. So I think India is expected to grow in FY21 at 12.7, FY22 on a year-on-year basis at 5.6, 5.7 odd percent, which is the best among G20 and the Asian economies, including China and America as well. So I think we stand to benefit significantly and disproportionately in terms of the pre-COVID recovery that we've seen. Corporate earnings are bouncing back very smartly. The other headwinds in terms of crude moving higher, yields moving higher, is an indication in terms of the jitteriness on the macro front. But I think in a bull market that you probably see, you will always get phases like these, where I think there will be excuses, macro reasons, geopolitical reasons where the markets might correct. But structurally, I think the underlying probably still remains extremely strong. From a fiscal perspective, India probably remains very well placed, both in terms of, as I said, the debt to GDP, our own sense in terms of not expanding our balance sheets quite significantly. So I think even though the fiscs might be a little bit stretched this year and next, it will come under control as growth returns significantly. And therefore, I think we stand out in the emerging pack. And it will be a favorite destination for some length of time as far as FIs and FPIs are concerned. Okay, so that's going to really encourage all the investors who are looking at India as the prospective place to put in money and to get more returns from the Indian equities as well. लेकिन अगर अभी valuations के लिहाज से या ये जो external factors आपने बताए हैं, inflation के लिहाज से कहीं पर भी अगर nervousness आती है और वो impending correction जिसके बारे में हम लगातार सुनते आ रहे हैं, अगर अभी होता है तो investors को आप क्या कहेंगे, उनकी strategy क्या होनी चाहिए? तो साक्षी, जैसे मैं कह रहा था, आई थिंक बुल मार्केट में फेजेस होंगे जहां पे करेक्शंस आनी है, अनिवार्य है। करेक्शंस किस फेज में आते हैं, जब ऐसी न्यूज आती है, और किस प्रोपोर्शन में आते हैं, 10%, 20%, वो डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। बट जब भी एक मेजर करेक्शन कोई मार्केट में आता है, तो थोड़ा सा पैसा मार्केट में डालना चाहिए। यू शुड नॉट बी पुटिंग एवरीथिंग एट वन गो। तो जैसे हम सिप्स करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, मुझे लगता है कि एक सिप स्ट्रैटेजी अगर हम डिप्लॉय करें, वंस यू ऑब्जर्व सच करेक्शंस, एक बहुत अच्छी रणनीति होगी। कौन से क्षेत्र, मुझे लगता है जहां पे गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग का एक बहुत बड़ा फोकल पॉइंट हुआ है, प्राइवेटाइजेशन की बहुत बड़ी ड्राइव चल रही है। तो जैसे गवर्नमेंट केपेक्स एक्सपैंड होगा ही होगा, केपेक्स इज एक्सपेक्टेड टू गो अप 34% 5.4 लाख करोड़ अगले वित्त वर्ष के लिए। प्राइवेट केपेक्स 100% फॉलो करता है गवर्नमेंट केपेक्स को, और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक जो सेक्टर्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड,
सीमेंट हुआ, पाइपिंग कंपनीज हुई, you're probably looking at financial services जहाँ पे अंडर पेनिट्रेशन है, इंश्योरेंस इज अ ह्यूज अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर। मुझे लगता है यहाँ पे जो अर्निंग्स मोमेंटम है, यहाँ पे जो लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये बरकरार रहेंगी बोथ फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिसी पर्सपेक्टिव, अर्निंग्स पर्सपेक्टिव, और वैल्यूएशंस रीरेट होंगे अगर ये दोनों चीजें एक साथ आती है। तो मुझे लगता है ये पॉकेट्स पे ओके कई सारे आपने यहाँ पर फैक्टर्स बताए जो कि लगातार मार्केट्स में अभी तक बॉयंसी लाने में मदद भी करते हुए आए हैं, भले ही वो ट्रिगर सरकार की तरफ से हो, बजट की तरफ से हो, जो फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर या केपेक्स पे है। इसके अलावा कौन सी थीम्स आप ट्रैक कर रहे हैं? अभी प्राइवेटाइजेशन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है, भले ही वो ऑयल एंड गैस स्पेस में हो या फिर वो पीएसयू बैंकिंग स्पेस में हो। क्या ये पॉकेट्स आपको अट्रैक्ट करते हैं? और ख़ास तौर पर अभी जो कमोडिटीज़ का राइज रहा है उसकी वजह से हमने काफ़ी बस देखा है इंडियन मेटल स्पेस में, ऑयल एंड गैस स्पेस में। इन सभी स्पेसेस को आप कैसे देख रहे हैं? तो साक्षी, आई थिंक दो चीजें अगर हम देखें, एक जो प्राइवेटाइजेशन ड्राइव है, आई थिंक बहुत महत्वपूर्ण होगा कि गवर्नमेंट एक पहले करके दिखाए। तो इफ दे आर एबल टू शो एंड एग्जिबिट दैट, जो दूसरे आई थिंक विकल्प सामने आएंगे इन टर्म्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन द नॉन स्ट्रेटेजिक सेगमेंट्स दैट दे हैव पुट फोर्थ, वहां पे अच्छा खासा तुल पकड़ेगा और फॉरेन इंटरेस्ट जबरदस्त है, जैसे मैं कह रहा था, इन टर्म्स ऑफ द इंडिया स्टोरी प्लेइंग आउट ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। दूसरा, आई थिंक जो कमोडिटी प्लेज रहते हैं, इसमें थोड़ा आई थिंक आपको साइकिल अच्छी तरह से खेलना चाहिए। आप पीक ऑफ द साइकिल पे अगर आके इन्वेस्ट करते हैं तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट द साइकिल माइट रिवर्स एंड यू माइट गेट कॉट ऑन द रॉन्ग फुट। इसलिए आई थिंक ऑयल एंड गैस क्षेत्र की जैसे बात की, तेल क्षेत्र की आपने, बिकॉज ऑफ व्हाट हैज हैपेंड इन टर्म्स ऑफ द ओपेक मीट, जो हमने देखा है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस बांध के चल रहे हैं, ऑयल प्राइसेस हैव बीन ऑन द बॉइल। मुझे लगता है आई थिंक अपस्ट्रीम, मिडस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम, ऐसे बहुत सेगमेंट्स है विद इन द ऑयल एंड गैस स्पेस, जहाँ पे अलग अलग चीजों की वजह से, ऑयल प्राइसिंग की वजह से, मार्जिन की वजह से प्रभाव पड़ता है। बट विद इन दिस स्पेस मुझे लगता है जो मिड स्ट्रीम कंपनीज है विद इन दिस एंटायर पैक का, आई थिंक लेस अफेक्टेड होती है, क्योंकि एक पास थ्रू इफेक्ट इनके पास होता है, वॉल्यूम्स जैसे लौट के आती है, एक इबिटा जो होती है और ऑपरेटिंग कैश फ्लो तो जो इबिटा होती है, दैट इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली। और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्लेयर्स, आई थिंक इसमें आई थिंक मुझे लगता है जो स्कोप है इन टर्म्स ऑफ नए जोग्राफिकल एरियाज जो इनको एलोकेट किए जाएंगे, जो पास थ्रू होती है, इवन इफ एलपीजी एलएनजी प्राइसेस मूव हायर, एक मिनिमल इफेक्ट आता है एंड कंज्यूमर पे भी, एंड डिमांड रिमेन्स एक्सट्रीमली स्ट्रांग अलोंग विद वेरी वेरी रोबस्ट बैलेंस शीट्स। सो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्लेस एक अपॉर्चुनिटी है। पीएसयू बैंक्स में अभी भी मुझे लगता है आई थिंक बैलेंस शीट के हिसाब से एसेट क्वालिटी प्रेशर्स जो Q2 Q3 में एग्जिबिट हुए थे, मे बी आई नीड टू गिव इट वन मोर क्वार्टर, क्या नंबर्स एग्जिबिट करते हैं, कैसे बैलेंस शीट को और स्ट्रेंथन करेंगे। कैपिटल एडिक्वेसी की एक बहुत इंपॉर्टेंट नीड है काफी बैंक्स को। प्राइवेटाइजेशन की हमने सुनी है कि कुछ बैंक्स आ सकते हैं, बट आई थिंक आई एम नॉट टोटली कन्विंस्ड, बिकॉज़ आई थिंक नंबर्स बहुत पैची और वॉलेटाइल रहते हैं। देयरफॉर आई थिंक कमोडिटीज अगर खेलना हो, इंक्लूडिंग मेटल्स एज यू पॉइंटेड आउट, अच्छी खासी रन हो चुकी है। जी डिमांड सप्लाई डायनामिक्स एक्सट्रीमली स्ट्रांग। सो फेरस, नॉन फेरस जो स्टील है, अन्य कंपनियां हैं, वहां की प्राइसिंग कैसे है, डिमांड कैसे, अभी तक तो स्ट्रांग है, बट मुझे लगता है थोड़े पुल बैक्स के लिए राह देखना चाहिए। स्पेशलिटी केमिकल साक्षी इज वन स्पेस जो मुझे लगता है अर्निंग्स के लिहाज से और एक एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी चाइना प्लस वन में अच्छे खासे पॉकेट्स हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटी सीज की जा सकती है। ओके आपसे मिड कैप और स्मॉल कैप सेक्टर्स के बारे में भी जानना चाहेंगे। हमने देखा कि अभी तक जो रैली देखने को मिली है लार्जली ड्रिवन बाय लार्ज कैप्स थी, लेकिन क्या अब आपको लगता है कि मिड और स्मॉल कैप्स का टर्न द टाइड करने का मौका आ चुका है, या इन सेक्टर्स पर फोकस करने का मौका आ चुका है? ऑलरेडी 2020 में ह्यूज रनर जो हमने ब्रॉड बेस्ड रैली देखी है, ये दोनों आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं क्या आगे जाते हुए? तो अच्छी खासी रैली हमने मिड कैप और स्मॉल कैप्स में भी देखी है साक्षी। तो आई थिंक जहां निफ्टी परफॉर्म नहीं कर रहा था पिछले महीने एज एन एग्जांपल, मिड कैप्स एंड जी स्मॉल कैप्स इनफैक्ट ब्रॉडर मार्केट्स परफॉर्म सिग्निफिकेंटली। तो यहाँ पे भी पॉकेट्स है। अगर लार्ज कैप के लीडर्स को छोड़ के इफ यू लुक एट द सेकंड रंग लीडर्स, अच्छे खासे आई थिंक स्टॉक्स हैं जहाँ पे मैनेजमेंट क्वालिटी अच्छी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कोई इश्यूज नहीं है, कैश फ्लोज काफी स्ट्रांग है, डेट लेवल जिसे हम कहते हैं आई थिंक लेवरेज टेक्निकल टर्म्स में, वो बहुत ज्यादा नहीं है, और अपॉर्चुनिटीज जो उभर के आएंगे डोमेस्टिकली एक्सपोर्ट के हिसाब से काफी अच्छी हो सकती है। मैनेजमेंट काफी कुछ कंपनियों में विद इन दिस ब्रॉडर यूनिवर्स इज आल्सो वेरी वेरी कॉन्शियस केपेक्स के हिसाब से। आई थिंक दे आर डूइंग केपेक्स इन द फॉर्म ऑफ हैविंग अ वैल्यू एक्रीशन जो अर्निंग्स में ग्रोथ और प्रभाव ला सकते हैं। तो बिल्कुल पॉकेट्स अवेलेबल है आज के मार्केट में भी विद इन द ब्रॉडर यूनिवर्स, जहाँ पे आई थिंक अच्छा खासा एक प्रभाव आ सकता है अर्निंग्स से, और वैल्यूएशन के हिसाब से भी आई थिंक दैट अपडेटिव एट रीजनेबल वैल्यूएशन, जिसे हम कहते हैं ग्रोथ एट रीजनेबल वैल्यूएशंस। एब्सोल्युटली।
हम देख रहे हैं कि साल 2020 में तो लगातार आईपीओज़ का एक स्ट्रिंग ऑफ आईपीओज़ हमने देखे और बहुत ही काफ़ी बजिंग एक्शन रहा उस स्पेस में। 2021 में भी लगातार एक के बाद एक नए आईपीओज़ आ रहे हैं और इन्वेस्टर्स का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इस पूरे ही स्पेस में जनरेट होता हुआ नजर आया। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द आईपीओज़ दैट वी हैव सीन so far in 2021 have seen a very encouraging response from the retail participation front. What would you advise the investors that how should they approach the IPO space really? So, a couple of things actually here again. I think a lot of people within the retail space have missed out on the humongous rally that we saw. So, I think either retail investors have gotten late, or if they've gotten early, they have stepped out of the trade a little bit early. So, I think the effect of the feeling of missing out, right? The FOMO effect, as we call it, is very, very prevalent at this point of time. So liquidity is awash in the system, and there is every expectation that when an IPO comes through, you see the subscription numbers, whether it's HNI, retail, institutions. So I think a lot of IPOs have delivered significantly in stellar returns. But one has to be very, very selective, I think. What is that company doing? In which segment is it operating out of? How is it stacked in terms of the peer comparison within the listed space? How is valuations looking in terms of is something being left on the table by the promoters or the retail investor? And most IPOs gap up with a huge, huge premium. So my own sense is that selectively look out for companies which fulfill all these criteria. Even if you don't get allotted an IPO, right? At O'Neill, we've got a brilliant methodology called as the IPO building base methodology. You need to probably give it 2 to 3 weeks to see how the IPO is shaping up in terms of price. And if the valuations come off a tad bit, my own sense is that IPO building base actually works out wonderfully well. So I think it's not a lost opportunity. I think it also is an opportunity where you can probably get into these stocks after they build up. Okay, so there's going to be a whole lot of opportunity for investors to really look out at that as well. Thank you very much, Mayuresh, for joining us and sharing your views on the markets and the select pockets that you really believe that investors should keep their eye out on, so that more and more profits can be generated and huge returns can be lapped up in the long run as well by selecting the stocks which have good value and fundamentally they are strong. And there are factors and triggers that will be very important to track, especially the earnings factor that will be coming up very, very soon. Thank you so much and it's been a pleasure speaking to you as always, and hope to see you soon on Money9 too. Thank you very much for joining us on this special edition of Market Masterclass. A whole lot of action will unfold on Money9, so stay tuned with us.